श्रीवास आंगन की लीला के बारे में कुछ प्रकाश डालिए और वहाँ का जो श्रीवास आंगन का गुह्यतरतम जो भाव है उसको जानना चाहते हैं। श्रीवास आंगन की लीला किस प्रकार की? श्रीवास परम भक्त है, भगवान की अति प्रिय भी है। Srivas Mahase is a very high level devotee and is very dear and near to Mahaprabhu. श्रीवास और कोई नहीं है, साक्षात नारद जी है। Srivas is none of any other except Narada. ये तो सब सुनी है जो नारद की जन्म कहानी, पिछले जन्म की जो तपस्या किया था, किस भाव से तपस्या किया था, किस घर में जन्म हुआ था। So we all know that how Narada Muni did austerity and how much austerity he did and where he took birth. इसलिए नारद भगवान की अति प्रिय है, इसलिए विशेष करके नारद की घर में महाप्रभु रात्रि भर कीर्तन करते। So that's why in the courtyard of Narada, Mahaprabhu was dancing and chanting. रोज महाप्रभु की नियम था। It was the timetable of Sriman Mahaprabhu every day. रात में जाके दरवाजा बंद करके कीर्तन करते। In the night time, going in the courtyard of Srivas Prabhu, closing the door, they were chanting and dancing. महाप्रभु श्रीवास के साथ सख्तो भाव भी प्रकट करते। And Mahaprabhu was in friendly mood with Srivas Prabhu. उनकी पत्नी के साथ भी माँ जैसे व्यवहार करते। And Mahaprabhu was behaving with the wife of Srivas Prabhu as mother. रोज जागरण करते थे। एक बार क्या हुआ, Every day, whole night, they were doing kirtan and sankirtan and dancing. One day, one incident, श्रीवास की जो संतान था वो गुजर गया, बीमार था। one day it happened that Srivas Prabhu, when son was sick and he passed away. श्रीवास को मालूम हुआ, पत्नी रोने लगी। And when Srivas Prabhu came to know this that his son passed away, रात में ये काम हुआ। and his wife started crying, and all this incident happened in the night time. श्रीवास कमरा में जाके कह रहे, देखो बालक गुजर गया, ठीक है, कपड़ा दे के ढक के रख दो कोने में। And Srivas Prabhu is saying to his wife, "Oh, our child passed away. Okay, just push his dead body somewhere in the corner of the house and covered with one cloth. किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। No one should know about that our child passed away. अरे रोना पीटना बंद। And now you stop all this crying." ये रोना सुन के हमारे महाप्रभु कीर्तन बंद कर दे तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। And if you cry, and if the crying sound reached to Mahaprabhu's ear and he stopped the kirtan, then the next morning I will leave this house and will go somewhere. रात भर कीर्तन नित्य गीत हुआ। All night the dancing and sankirtan was going on. सुबह के टाइम पर महाप्रभु अंतर्जामी तो है ही, सब जानते। Mahaprabhu is knowing everything. The next morning, सुबह बोल रहे, शिवा तुम्हारी घर पे कुछ हुआ क्या? next morning he's asking to Srivas Prabhu, Srivas, there's something went wrong at your home or what?
बोले नहीं प्रभु, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। Srivas Prabhu saying, oh, no, nothing happened. ना Everything is, शिवाजी, everything is okay. तुम हमारे पास कुछ छिपाए रहिए, Then Mahaprabhu said, no, I think you are hiding something. हम देखेंगे। Okay, I will check myself. महाप्रभु सीधा जाके जो कपड़ा में लिपटा हुआ था बालक, उसको उठाए। So Mahaprabhu directly reached at this place where this dead body of this child was there. And Mahaprabhu removed this cloth and saw this body. मलानी रोने शुरू कर दिया जोर जोर से। शिवाजी को की Malani Mataji started crying. उनको चित्कार छोड़ के आसपास की घर की सब आदमी आ गए। When the other neighbors listened that the sound of crying of Malti Mata is coming from her house, all neighbors collected at her house. माता जी तो अब ऐसा करके रोने लगी, सिर धरती में पटकने लगे। Now she is crying and hitting her head on the floor. एक ही तो संतान था, वो भी गुजर गया। Just only one child was there, and he also passed away. हमारी प्रभु कीर्तन कर रहे थे, इसी टाइम गुजर गए। And at the same time, when our Sriman Mahaprabhu was doing kirtan, at that time our child passed away. पत्नी की बहुत दुख, Wife, Srivas Mahaprabhu's wife was very sad. महाप्रभु जाके चरण स्पर्श कर दिया बालक को, Sriman Mahaprabhu, रास किया पैर से। when Sriman Mahaprabhu went to near this child's dead body, he touched his feet. बोले उठो, तुम क्यों सोए हो? And then he said, oh, you get up, why you are sleeping? तुम्हारी माता जी रो रहे हैं, You get up, your mother is crying badly. उठ जाओ। Get up now. उठ के बैठ गया। Then this child, the son of Srivas Prabhu, get up and sit down. बालक उठ के बैठ गया। प्रभु की चरण स्पर्श पानी के साथ साथ जिंदा हो गया। Just by the touching, with the touching of Sriman Mahaprabhu, he became alive. बोले तुम माता पिता को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? Then Mahaprabhu asked to this boy, बालक को कह रहा। where you were going to leaving your parents? बालक जवाब दे रहा है, Now this boy is saying, कौन किसके माता पिता है? whose parents? हम तो कितना बार इनको पिता बना है। So many time I was his father. कोई किसी के माता पिता नहीं है। No one in this world is anyone's mother or father. हम कितना बार इनके पिता बना है, ये हमारी कितना बार पुत्रों बना है। Many times, I know in many life he became my son and I became his father. हमारी इतना दिन ही तक यहाँ रहना था, बस हमारे दिन खत्म हो गए, हम चल गए। It was decided my days were only but decided now my days are completed, so I will go now. महाप्रभु बोल रहे, शिवा क्या कह रहे हैं तुम्हारी बालक? Then Sriman Mahaprabhu said, asked to Srivas Prabhu, oh, what your child is saying? तुम तो रो रहे थे। बोले मेरी बालक क्या कह रहे हैं? You were crying that my child, but what your child is saying about you? ये बोले तुम्हारे भी पिता है। He is saying that many times in many life he became your father. तो तुम किसके लिए रो रही हो? So tell me, for whom you are crying? कोई किसी को नहीं है संसार। There is nobody belongs to anyone in this world. ये आत्मा घूमते रहती है। The soul is always going one place to another.
कभी पत्नी बनती है, कभी पिता बनती है, कभी पुत्र बनती All the है। time ये आत्मा की काम है। relations are changing all the time. Sometimes wife, sometimes father, sometimes son. ये संसार की चक्कर ही ऐसा है। This is a cycle of this world, material world. इतना बोल के बालक फिर सो गया, मर गया। Then after saying all this boy lay down and again and became unconscious and is completely dead. ले जाके कितना बड़ा भक्त है। So how big devotee is Srivas Prabhu is? पत्नी से कहा अगर प्रभु की कीर्तन बंद हो गया तो हम घर छोड़ के चलते। He said to his wife that if Mahaprabhu stops kirtan in between listening your crying, the next morning I will leave this house and will go away. संतान गुजर गया इसलिए तुम रोगे नहीं। If your child passed away, you will cry? No. हमारी कीर्तन बंद हो जाएगा, प्रभु की कीर्तन आनंद बंद हो जाएगा। If you will cry, Prabhu is in totally deep in kirtan mood. So this will disturb. शिवास जानती है जे संसार में कोई Srivas Prabhu is knowing. एकमात्र प्रभु ही अपन जन है, और जितनी है ये सब पराया ही है। He is knowing the system of this material world. He is knowing that only Mahaprabhu is ours, not any other one. ये संसार में एकमात्र राधा रानी अपन है, और सब In this पराया। material world, or in this world where we are alive right now, only Radharani is ours. ये संसार की धर्म ही ऐसा ही। This is the cycle of this world. महाप्रभु एक दिन विश्व रूप की दर्शन कराया शिवाजी को। One day, so when Mahaprabhu manifested himself and make Srivas Prabhu to have darshan of Vishwarupa, चतुर्भुज धारण करे क्या? by having the form of Narayan with 4 hands, he shown by himself to Srivas Prabhu Vishwarupa. दर्शन कराया। ये देख शिवाज की मन में कभी कभी द्विधा आ जाते थे, भगवत की श्रद्धा घट जाते थे, इसलिए महाप्रभु अपना रूप दिखाया, देखो हम कौन है। Sometime in the heart of Srivas Prabhu, the faith and belief were lacking. That's why one day Srimad Mahaprabhu shown him his Virat, this vast form of Vishnu Narayan. अद्वैत प्रभु भी कीर्तन में योगदान करते थे। Advaitacharya Prabhu was also contributing in this kirtan. तो एक दिन अद्वैत प्रभु की मन में कुछ शंका हुआ। So one day there was some doubt in Advaitacharya Prabhu's mind. प्रभु को परीक्षा लेने के लिए So he tried to test Srimad Mahaprabhu. बहुत ऐसा करके गाने लगे जो सुर लय छोड़ के गाने कीर्तन करने शुरू कर दिए। So Advaitacharya Prabhu started doing kirtan without any melody, without any rhythm. तो कोई रस नहीं है कीर्तन में, That this kirtan is without rasa. आनंद उत्पन्न हो ही नहीं सकती। Means while singing this kirtan, nobody can feel blissful. ऐसा करके कीर्तन करना। So this type of kirtan he started. महाप्रभु जब नृत्य में आनंद नहीं हो रहा है, नृत्य करने में दिक्कत हो रहा है, गुस्सा हो गया महाप्रभु। So at the time of kirtan, what type of kirtan Sri Advaitacharya Prabhu was doing, and the situation was not so blissful. And Mahaprabhu was also not feeling so good, so he became angry. गुस्सा होके अद्वैत प्रभु को पकड़ के घुसा मारने लगे, बहुत जोर जोर से। So in the mood of anger, he just
caught Advaitacharya Prabhu and he started beating with his और क्या कहने Punch. लगे, नारा तू हमको बुला के लेके आया और अभी बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। Oh, you old man, you brought me here, you called me here, and I came. And when I am here now, so you are just troubling me. तेरे को आज हम शिक्षा देंगे। Today I will teach you lesson. जब महाप्रभु आदित्य प्रभु को मारने लगे, आदित्य प्रभु हंसने लगे, सही है प्रभु। Sriman Mahaprabhu, when started beating to Advaitacharya Prabhu, then Advaitacharya Prabhu said, "Oh, yeah, really you are." हम जो आराधना किया, जल तुलसी देके इतना दिन तक, जे स्वयं भगवान आ जाए धरती में, अवश्य जरूर आए। आज हमारी परीक्षा हो गई। So, what I did, I called you by just offering a glass of water with one tulasi leaf, and I was wishing that you should come. And in between, I had some doubt, but today my all doubts have gone. आदित्य प्रभु मन ही मन बहुत खुश होने लगे। Advaitacharya Prabhu was inside, he was very happy. आज हमारे जन्म सफल हो, Today my life is successful. आज हमारी आराधना सफल, फल मिल गया। Whatever the bhajan I did, today I am success. आदित्य प्रभु चिंतित हो गए थे। Advaitacharya Prabhu was little bit worried about this. जीव की दशा देख के आदित्य प्रभु बहुत बड़ा चिंता करते थे। So while looking the state, the situation of Jiva, Advaitacharya Prabhu was very ये very भोली much जीव को worried. कैसा उद्धार कर सकती है, कौन उद्धार कर सकती है? How these type of all Jiva will be delivered? Who can do? कोई है ही नहीं संसार में। Who can set them free? There is nobody. I cannot see anyone in this world. एकमात्र स्वयं भगवान अगर अवतार ग्रहण करे तो मुक्ति हो सकती है। So only God, He can do. He can set them free. Only He can do. If He take incarnation, if He Himself comes, then it is possible that these type of jiva will be free. बोले भगवान कैसे आएंगे? Then he thought, how Bhagavan will come? उनको कैसे पुकारने से वो आएगा? How should I call them that He will come? विचार करते करते उनके मन में यही आया, जल तुलसी सम नहीं यार धर। Thinking a lot after he decided that with except a glass of Ganga Jal and a leaf of Tulsi, nothing is greater than this kind of offering. उनकी प्रतिदिन आराधना यही था, गंगा में जाके तुलसी और गंगा जल अर्पण करना। Every day Advaitacharya Prabhu was going to Ganga, and every day he was offering the Ganga Jal with one Tulsi leaf. অদৈত্যের হুঙ্কারে সুরধ্বনির তীরে আইলেন নাগর রায়। On the calling of Advaitacharya Prabhu, by listening his calling, Nagar Rai, means Sriman Mahaprabhu, appeared over there. नागर को कहा, कन्हैया को कहा जाता है। Nagar is the one of the name of Krishna. कृष्ण स्वयं भगवान। One of the name of Bhagavan is Nagar. अद्वैत प्रभु बहुत खुश। प्रभु Advaitacharya became very happy. मिठाई खाने के बाद अद्वैत प्रभु कीर्तन ठीक भाव से करने लगे, सुर ताल लय मिला के कीर्तन करने After beaten by और नृत्य करने लगे। Sriman Mahaprabhu, when he became happy, then Sriman Advaitacharya Prabhu started kirtan in full of melody and rhythm. ये सब लीला शिवा संगम में होती है। All this leela happened in Srivasangam.
एक दिन One day, कीर्तन करते करते भाव इतना गहरा हो गया उधर महाप्रभु का। while doing kirtan, शिवा Sriman Mahaprabhu was very deeply in bhav. शिवास की पत्नी कीर्तन रस आस्वादन कर रहे थे, जाके उनकी गोद में पड़ी। So Sriman Mahaprabhu was so deep in bhav, and the wife of Srivas Prabhu was also there. She was also tasting, getting taste of this kirtan. So Sriman Mahaprabhu was so much in deep bhav. He just went and sat down in the lap of of Srivas Prabhu's wife. शिवास प्रभु की पत्नी की गोद में जाके पड़ी, जैसा बालक बैठती है। He sat down as a small child sit down in the lap of mother. जैसा बालक चूसी पीती है ऐसे पीने शुरू कर दिया। And at that time, he started, means Srivas Prabhu's wife, she started also feeding to Sriman Mahaprabhu. देख के सब भक्तबिंद जय हो प्रभु। All devotees were there and they were saying Jai Ho, Jai Ho. अलौकिक लीला प्रभु शिवास की कीर्तन की माध्यम से किया। Many different Leela with full of rasa Sriman Mahaprabhu did in Srivasangam. शिवास की आंगन में कीर्तन सुन के कुछ नास्तिक लोग बहुत परेशान हो गए। And some non-believer were also there who were listening the kirtan in Srivasangam and getting disturbed. रात में सोने नहीं पाता, They were saying रात भर कीर्तन करते हैं। the whole night they are doing kirtan. We cannot sleep whole night. उन लोग को बहुत ईर्ष्या होने लगी। So they became jealous. शिवास तो दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे, तो दरवाजा की बाहर जैसा देवी मैया की पूजा करती हैं, काली की पूजा करती हैं, क्या क्या सामग्री होती है काली की पूजा में? जबा फूल होता है, So when Srivas Prabhu रक्त चंदन होती है, was doing kirtan, just closing his door of his courtyard, then these neighbors, they were putting the things that were being used in the worship of Kali and Durga, all these, like the red flower, hibiscus flower, देवी पूजा में जो जो सामग्री चाहिए this red sandal, सब कुछ kumkum. लिया है कि उसकी दरवाजा पे आसन दिया और पूजा जैसा करती है ऐसा करती है। So actually the Srivas Prabhu courtyard door was closed, but these neighbors were coming at the door and they were keeping all these types of ingredients that were used in Durga or Kali Puja, and they were just decorating his door with all these type of things like tantra. शिवास सुबह उठ के जैसे दरवाजा खोल के बाहर निकला, देखता है जो सब देवी पूजा की सामग्री। And Srivas Prabhu in the early morning when he was opening the door after doing kirtan whole night, he was looking that all these types of Durga and Kali worshipping things are here. दुख नहीं माना शिवास, Srivas Prabhu didn't feel bad. और बोलने शुरू कर दिया, देखो देखो तुम लोग सब आओ इधर, देखो हम रोजाना देवी पूजा करता हूँ। And he just doing opposite, he was calling to the people, those who were doing Sankirtan and dancing whole night. He was calling them and saying, you see, every day I am doing this Durga and Kali Puja. हम कृष्ण की आराधना नहीं करती हैं, हम देवी मैया की पूजा करते हूँ, देखो ना। You see, I am not doing the worship of Sri Krishna. I am doing the worship of Devi Kali.
सब सामग्री उठाए ले जाके गंगा में डाले आए, स्नान करके पवित्र होकर घर लौटे। So Srivas Prabhu was doing collecting all these things, whatever the ingredients they put over there, just packing all these things and he was putting in the Ganga and taking bath of Ganga, he was just coming back. महाप्रभु यही बात सुन लिया। When Mahaprabhu knew this, बहुत Mahaprabhu became very sad. राष्ट्रीय अंगन में ऐसा उपवास करें, All this happened in Srivas Angan today. भक्तद्रोही Srivas never did this type of puja. भक्तद्रोही So they are the महाप्रभु बोल रहे हैं भक्तद्रोही, इनको दंड, Sriman Mahaprabhu saying, oh, they are against my devotee. इसके दंडित करेंगे। They will be punished. ये कौन आया था चापाल को? Who they were, who put all these things in front of Srivas Prabhu's door, they were Chapal Gopal. कुछ दिन के अंदर कुष्ठ हो गए दोनों। So after some days, when they were doing all these things, Chapal Gopal had leprosy in their body. ऐसा कुष्ठ हुआ, गलित कुष्ठ, हर टाइम पानी निकालते थे। And this leprosy was so intense, so all the time, the flesh of their body were just rotting all the time and it was falling down. अगर शरीर गल जाए, पच जाए, जैसा बदबू मारता है ऐसा बदबू मारना। And they were started smelling very bad. घर में नहीं रहने पाता है। So घर के आदमी सब बोले तुम जाओ यहाँ से। their family member was just kicking them out, that you are smelling very bad, just go out of this house. गंगा के किनारे में जाके पड़ गया दोनों। So they were not any place to live. They just gone at the bank of the river Ganga and sitting down over there. उनको अपराध की मालूम हो गया, शिवाज के साथ जो हम लोग अन्याय किया है ये महा अपराध हो गया। So at that time they realized that they made some mistakes, offense against Srivas Prabhu, and in the result all this happened. शिवाज महाप्रभु हम लोग को क्षमा कर दे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो हमको बात में कोई संभावना नहीं। Now the only one way to that save ourselves, if Sriman Mahaprabhu forgive us, then something can happen good with us. महाप्रभु एक दिन गंगा स्नान में गए, So Mahaprabhu one day when he went for bathing in Ganga, और दोनों आए के पकड़ लिया। when both Chapal Gopal came and hold his feet, बोले तुम हमारे पास कोई अपराध नहीं किया है, then Sriman Mahaprabhu said that you didn't do anything wrong with me. अपराध हुआ है शिवाज के पास। You did अपराध with Srivas Prabhu. जाओ उनकी चरण में पड़ो, Go, hold his feet, जो भी तुमको मुक्ति मिलेगी। then you will be free. पहले तो बहुत गुस्सा हो गया थे महाप्रभु। Before when Mahaprabhu saw both of them, he became very much angry. कोटि जन्म तोरे किया एक खाई, तू भक्त देती। You are एक जन्म against नहीं, my devotee, so I will be let you in this situation for billion and billion birth. तोरे ना उद्धार हुए, तुमको कोई भी उद्धार नहीं करे। I will never do good for you. एक जन्म में कोटि जन्म ऐसे किया खाएंगे। Not in this birth only. As many births you will take, each and every birth you will have the same condition with you. जब महाप्रभु को छोड़े नहीं, फिर महाप्रभु दया आ गया, फिर बता दिया जाओ शिवाज के पास। So when they didn't left Sriman Mahaprabhu's feet, then Mahaprabhu melted a little bit and became a little kind to them. Then he shown them the path
how they will be free. भक्त भगवान और भक्त एक हो जाए। भक्त की अगर कोई कष्ट हो, कोई निंदा करे तो भगवान को सहन नहीं। So one stage comes then where devotee and the God, devotee and Bhagavan, they become one. And in this situation, Bhagavan cannot tolerate if something goes wrong with devotee. जीव को उद्धार करने के लिए प्रभु की अवतार है। Just set this jiva free, Bhagavan comes on this earth. अगर चपाल गोपाल को प्रभु क्षमा नहीं करेगा तो फिर अवतार लेना व्यर्थ हो जाए। If Sri Mahaprabhu didn't forgive Chapal Gopal, then the Mahaprabhu birth will be not useful. यही सोच के ही महाप्रभु चपाल गोपाल को कृपा Just by करता है thinking this, और Sriman Mahaprabhu set them free. उनको कुष्ठ रोग को ठीक कर। And thus, he removed their leprosy from their body. ये है बात अंगन की कीर्तन की महिमा। This is the Srivas Arvind Kirtan glory. शिवाज की भगवाনের अत्यंत प्रिय था। Srimad Mahaprabhu was very near and dear to Srivas Prabhu. इसीलिए महाप्रभु सबकी आंगन में जाके कीर्तन नहीं करते थे। So that's why Srimad Mahaprabhu was not going each and everyone's courtyard. एक अद्वैत गृह One, और शिवाज आंगन में। one Srimad Mahaprabhu was going only at two places. One was at Advaita Prabhu's house, and the second was Srivas courtyard. शिवाज आंगन ही ज्यादा कीर्तन करते थे, ज्यादा टाइम। More and Srimad Mahaprabhu was spending more and more time in Srivas Angan courtyard. कभी कभी अद्वैत प्रभु की वहाँ पहुँच गए। Sometime he was going to Advaita Acharya's house. नहीं तो ज्यादा टाइम ही शिवाज आंगन में आनंद करते। Most of his time he was spending in Srivas Angan. शिवाज प्रभु को जानते थे और प्रभु शिवाज को जानते थे ये Both- कौन है। Both were knowing each other nicely, Srimad Mahaprabhu and Srivas. शिवाज भी जान लिया ये कौन है, साक्षात कृष्ण है। Srivas Prabhu was also knowing that who is he? He is none of any other, himself he is Krishna. ये रस आस्वादन करने के लिए ही अवतार हुआ। Just to taste the nectar, just to bath, he just appeared. कीर्तन है बहिरंग, Outside is Kirtan, बहिरंगा है कीर्तन। ये नाम संकीर्तन जो है इसको बहिरंगा रखा गया है और अंतरंगा रस आस्वादन। outside he is doing Kirtan, Sriman Mahaprabhu, but inside he is tasting this nectar. राधा रानी जो ब्रज भूमि पे राधा रानी कृष्ण कृष्ण बोल के जे रोने के लिए आनंद अनुभव करते थे, वही रस आस्वादन करने के लिए ही नवद्वीप में अवतार। So in Brajalila, what Radharani was just chanting the name of Krishna, Krishna and crying, and tasting this nectar, the same, to taste this kind of this same rasa, Sri Mahaprabhu also appeared. राधा रानी को क्या आनंद मिलते थे, क्यों रोते थे कृष्ण कृष्ण कह के। Why Radharani was crying and what type of taste she was getting while calling Krishna, Krishna. यही रस आस्वादन करने के लिए
कृष्ण एक दिन मन में विचार कर रहे हैं, So just thinking like this, Krishna is thinking one day that what type of rasa, what type of nectar Radharani is getting. बोले राधा रानी हमारी नाम जप के क्या सुख मिलता है उनको, ये रस हम कैसे आस्वादन करें। What type of nectar Radharani is getting after calling my name. So how I can taste this nectar, what she is getting. बोले राधा रानी जो बॉडी है ये हमको प्राप्त हो जाए, जो भी ये रस आस्वादन हम Then करें। Krishna said that if I will get the body of Srimati Radhika, then I will be able to taste this nectar. हमारी ये शरीर के द्वारा तो ये रस आस्वादन नहीं होता। By this body, in the form of Krishna, I cannot taste this nectar. राधा अंग धारण करके हमको So when I will get the body of Srimati Radhika, अवतार लेना है। so I will have to take this incarnation, taking the body of Srimati Radhika. यही सोच के महाप्रभु ये अवतार है। So as a result, Sriman Mahaprabhu took this type of incarnation. भगवान जब अवतार होते हैं केवल एक काम के लिए नहीं हो अवतार होते हैं। When Bhagavan appeared, the incarnation is there. He has so many different jobs there to do. अवतार only for लेने one के thing. साथ साथ न्याय कर्म करके जाते हैं। But after taking incarnation, he has many things to do. अपना रस आस्वादन तो है ही है मूल कार्य। The main thing is to taste this nectar, taste this rasa. बहिरंगा जीव उद्धार, And for outside, नाम संकीर्तन जीव उद्धार। by this Nam Sankirtan, to set the jiva free. इसलिए भक्त लोग इसको वर्णन करते हैं। That's why devotee is describing. बोले महाप्रभु नवद्वीप में क्या लेके आए हैं? With what Mahaprabhu came to know you, जीव के लिए क्या लेके आए हैं? what he brought for jiva. बोले तोरी लेके आए हैं, नाव। Raya, he brought one boat. तोरी लेके आने की क्या मतलब है? What is the meaning that he brought one boat? ये कोली में जितनी जीव है सबको नाव में बैठा के ले जाएगा। So ये भव सिंधु पार। he will bring all jiva of this Kali Yuga in this boat, and he will bring them to cross this Bhavasindhu of this material world. अपना भक्त बिंदु को एक साथ लेके कीर्तन करते थे महाप्रभु, और नित्य करते थे। और क्या बोलते थे? आओ। So when Mahaprabhu was doing Sankirtan and dancing with his devotee and saying, "Come, तुम लोग के लिए हम तोरी लेके आए हैं, नाव लेके आए हैं। come, I have ये one, भव सिंधु पार कर देंगे। I have one boat for you. And you all sit down, I will cross you from this sea." बोले प्रभु तो बुला रहे हैं, हम तो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, नाव भी नहीं दिखाई दे रहा। Then devotees are saying that, oh, Sriman Mahaprabhu is calling, but we are not able to see any boat. बोले होरी नाम एक तोरी खानी, ये बोले, होरी yes. नाम जो है यही नाव है। But this Harinam is in the form of this boat. कितनी भी है जीव, कि महापापी हो, कितना पाप कर्म करे, नाव पे एक बार आ जाओ, एक बार बोलो। Doesn't matter how sinful is a person, just come and sit in the boat of this Harinam. केवल मुंह से उच्चारण करने से ही हो जाएगा। Just by chanting, ये भगवती रूपा, you will be free. यही तोड़ी लेके आए हैं महाप्रभु। With this boat I have. बोले अगर नाव होगा तो उसको बहाने के लिए चलेगा कैसे आगे? Then devotee is asking, if boat is there, then definitely there is some
something to push, then this boat will go little further. आगे चलने के लिए तो कुछ चाहिए ना. So for this support to make the boat little further gone in the sea, there should be something. और ये नाव को चलाएगा कौन? And who will sail this boat? चलाने वाला तो एक ड्राइवर चाहिए ना. One sailor is also needed. হরি নামের তরি খানি শ্রী গুরু কান্ডার. In the boat of this Harinam, Srila Gurudev is there in the form of this. ये नाव को चलाएगा कौन? गुरुदेव श्री गुरु कांडा. So the Srila Gurudev is the sailor of this boat. और नाव में बादाम देने से बहुत जल्दी चला जाता है हवा लगने. हाँ? So there is a thing in the yacht, this triangle thing is there. When we move this thing, then the boat runs fast in the water. तो बोलो ये बादाम किससे दिया जाएगा? So how, ये ठंडा कैसा करा जाएगा? with what support this thing will move? बोले राधा नामेर बादाम. So this type of thing means this will be central. The Radharani name will be there. हरि नामेर तोरी और राधा नाम की Paul. So this boat is made of this Harinam, and the center that makes this boat run faster in the sea, that is Radharani name. और श्री गुरु कंडारी गुरु चलाएंगे तोरी. And the sailor is Srila Gurudev. अनाथे जीव हो जाएंगे ये भवसिंधु का. So by the help of all these, we will be all set free. केवल मुंह से उच्चारण करने से ही पार हो जाएंगे भगवत. Just by chanting. एक बार हरि बोल हरि बोल. Just say it once, Hari Bol. ये महाप्रभु बहिरंगा रस अंतरंगा रस राधा रानी कृष्ण जे रस है रस आस्वादन करने के लिए ये अंतरंगा जो भक्त मिलती है उनके साथ ये रस आस्वादन करती है. When intimate devotees are there, then he tastes differently. और ये बहिरंगा नाम संकीर्तन बहुजन लेके कीर्तन करते थे नगर नगर. And this Bahiranga outside him, taking all the devotee, he was doing Sankirtan, moving each and every street, each and every town and city. ये अजाचित भाव से प्रेम प्रदान. कौन सा भाव? मतलब हिंदी में क्या होता? अजाचित मतलब जबरदस्ती देना. He was calling and giving. Means जबरदस्ती प्रेम दान करना. forcefully giving the love to all. जीव को पुकार पुकार के पकड़ पकड़ के Calling लिया each and every one. प्रेम दान करना. Calling each and everyone and giving just as a gift this love. ये पूरी हो तो जीव के उद्धार करने के लिए महाप्रभु अवतार. So when Mahaprabhu incarnation is just to set free this Kali Yuga Jiva. और एकला अवतार लेने से लीला पूर्ण नहीं होती. So if Mahaprabhu is taking incarnation alone, then Leela is not complete. एकला एकला जब भगवान आती है पृथ्वी में अवतार ग्रहण करती है जब खनक टाइम के लिए आती है थोड़ी टाइम के लिए आती है. If he is coming alone, his incarnation is a single incarnation, then his staying time is very short. जैसा बड़ा हो
like Vara avatar, मत्स्य, Matsya avatar, कूर्म, Kurma avatar in the form of fish, in the form of pig, in the form of निसिंह अवतार, turtle, ये पूरा पार्षद लेके नहीं आया। and in nursing avatar. So these type of incarnation didn't bring um, helpers with them, means other those who help in the vast leela. कोनो कार्य उद्धार के लिए आते हैं तो पहले पार्षद को भेजते हैं। So if he come for, there is a big plan. If there is a big plan, then he comes. But before he comes, he send his representatives. जैसा राम अवतार में भी है, The same thing in Rama avatar. जो तो देवता था सबको पहले भेज दिया, कोई बंदर हुआ, कोई भालू हुआ, Whosoever demigods were there, he sent them first. Some of them became monkeys, some of them became bear, ऐसे ही like this. ये नवद्वीप में भी है। The same thing in Navadvip also. वृंदावन में जितनी शाखा था, Also in the Vrindavan, all these friends of Krishna. सब शाखा लोग वहाँ पहले जन्म लिया। So all these friends of Krishna took birth before Krishna came here in Braja. दादर गोपाल, Dwadas, this 12 Gopal, Dwadash Gopal. ये कन्हैया की जो प्रिय शाखा था, These were Krishna's very nearest and dearest friends. राधा रानी की जो प्रिय सखी थी, Radharani's nearest and dearest friends were, ये सब मिला के 164 परिकर होती है। so all together these were 164 parikars. नवद्वीप में अवतार है। At the same, this 164 parikars took incarnation in Navadvip also. इसलिए एक जगह में कोई नहीं हुआ, सब अलग अलग। That's why even in the area of Navadvip, they all didn't took birth at one place. They took birth at different places. इस भाव से रस आस्वादन करने के लिए महाप्रभु की ये अवतार। So like this, by just tasting this nectar, Srimad Mahaprabhu incarnated. मुख्य उद्देश्य रस आस्वादन। The main aim, the main plan was to taste this nectar. बहिरंगा नाम संकीर्तन जीवेरी कारण। And outside, he was doing Sankirtan for us, for all Jiva, जीव उद्धार के लिए ये नाम to set Jiva free, नाम प्रेम विचार। to give, to distribute this name and to distribute this love. बोलो राधा गोविंद की जय। राधा रानी की जय, साधु महाराज की जय, जय जय श्री राम, सब भक्तों बिंदु की जय, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। Jai Nitai.